Good afternoon, everyone. Today we are back with our Indian Partnership Act and Sales of Goods Act का हम लोग आज MCQs करेंगे. There'll be 15 MCQs that we'll be taking today. I am Unnati Srivastava and I've done my masters in law from NLU Delhi. बाकी information आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं. Before you begin the session, please like and share the session and also press the bell icon and subscribe to the channel. Unacademy is helping you prepare for all state judiciary exams. I hope आप लोग की हरियाणा और राजस्थान की preparation अच्छी चल रही होगी. Now this is time that you pick up your bare acts और आप अच्छे से अपनी bare acts को complete करिए. These are the dates for Rajasthan and Haryana and I think इसके तुरंत बाद we'll have more notifications coming up. तो अच्छे से preparation करनी है. You can get on Unacademy and also compete with thousands of aspirants. We have a स्पेशल फ्री क्लासेस होती हैं हमारी. मेरी फ्री क्लासेस होती है 6 PM पे. आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक वहाँ पे दिया है. ऑल्सो मैं आजकल आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा रही हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. एंड 6 PM पे ऑन दी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एक्सक्लूसिवली ये क्लासेस होती हैं. Also there are plus subscription available. There are these batches जो start हो चुके हैं. कुछ अक्टूबर में start हुए हैं. This is a batch जो सितंबर में start हुआ है. इन सारे ही बैच को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप उन्नति लाइव कोड का यूज करके उसमें 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. ऑल्सो आप उन्नति लाइव कोड का यूज करके कोई भी फ्री प्लान अनलॉक कर सकते हैं और कोई लाइव टेस्ट आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं. उसके लिए ये कोड ये है हमारी हरियाणा और राजस्थान के कंबाइंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट की सीरीज जो 24 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है. सो नेक्स्ट टेस्ट हरियाणा का है 31 अक्टूबर एंड उसका जो लास्ट टेस्ट है हरियाणा का वो नवंबर 7 को है. और फिर बाकी तीनों राजस्थान के टेस्ट हैं 7 नवंबर, 14 नवंबर एंड 21 नवंबर. Also, we have a rapid revision series which is going on right now, जो कि जिसमें आपको हरियाणा और राजस्थान के लोकल लॉज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसके चीज़ें हैं वो पढ़ाई जा रही है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. दीज आर द रेगुलर मॉक टेस्ट विच आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी जिसको आप अटेंड कर सकते हैं. एंड ऑल्सो दिस इज अ सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग. एज आई टोल्ड यू, उन्नति लाइव कोड का यूज करके आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. सो आप ये कोड यूज कर सकते हैं. दिस इज अ टेलीग्राम चैनल. ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है. आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. लेट्स क्रैक लॉ UA जुडिशरी. इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं. Now let's start. Let's begin with the questions. So first question is, the Sales of Goods Act 1930 deals with A. Sale of movable property, B. Mortgage of movable property under exceptional circumstances, C. Pledge of movable property with mutual consent of the parties, D. All of the above. सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका किस टाइप की प्रॉपर्टी से डील करता है? नाउ योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विथ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, द करेक्ट आंसर इज सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. टीपीए एक्चुअली डील करता है आपका सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. TPA deals with sale of immovable property while sale of goods act deals with sale of movable property. So it does not deal with sale of immovable property. Next question. An unpaid seller may not exercise which of the following rights? Question है जो एक unpaid seller होते हैं, जो seller जिनको उनका payment नहीं मिला है, वो इनमें से कौन सी rights को exercise नहीं करेंगे? Okay. Question ये है, that unpaid seller will not exercise which of the following rights? Options है A. right of lien, B. right of stoppage in transit, C. right of resale, D. none of the above. The answer to this question is none of the above. Why the answer is none of the above? क्योंकि पूछा है कि इनमें से unpaid seller क्या क्या exercise नहीं कर सकते हैं, जबकि we know that unpaid seller right of lien, right of stoppage in transit, right of resale, हम सब वो unpaid seller ये सारी rights को exercise कर सकते हैं. Hence the answer to this question is none of the above. Let's move to the next question.
An agreement to sell is A, an executory contract, B, an executed contract, C, a standard form of contract, D, a contract of indemnity. एक अग्रीमेंट टू सेल, अगर मैंने और आपने एक अग्रीमेंट किया है टू सेल, वो क्या कहलाएगा? एन अग्रीमेंट टू सेल विल बी कॉल्ड एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी उसमें उसको सेल, अग्रीमेंट टू सेल जो है, अग्रीमेंट टू सेल, ये सेल नहीं बना है अब तक. दिस इज नॉट सेल येट. सो अंटिल अनलेस इट बिकम्स सेल, इट विल बी एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. जब वो सेल बन जाएगा, जब उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे हो जाएंगे, उसमें सारा पेमेंट हो जाएगा, दैट इज व्हेन इट विल बिकम एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. तब वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. टिल देन इट विल बी एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. सो एन अग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's look at the next question. Which provision of the Sale of Goods Act 1930 deals with the concept of existing goods or future goods? ये directly बेयर एक्ट का क्वेश्चन है कि हमारा सेल ऑफ गुड्स जो है, द सेल ऑफ गुड्स 1930, ये किस तरह के गुड्स से डील करता है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 6. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स की बात की गई है सेक्शन 6 के अंडर. ऑलराइट, सेक्शन 6 के अंडर हमारी सेल ऑफ गुड्स, फ्यूचर एग्जिस्टिंग गुड्स की बात की गई है. इफ वी लुक एट सेक्शन 5, तो ये बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, is what section 5 talks about. And if we look at section 7, now इसमें बात होती है perishable goods की. Okay, so goods perishing before the contract is made, before making the contract. This is what section 7 is talking about. Okay, and section 8 is talking about गुड्स जो पेरिश हो जाते हैं, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल. ओके, आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल. दिस इज व्हाट ऑल दी सेक्शंस आर टॉकिंग अबाउट. तो सेक्शन 6 इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बात करता है फ्यूचर और एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में. ओके, फ्यूचर और एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करता है सेक्शन 6. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड. एक ऐसा स्टिपुलेशन जो पर्पस, जो मेन पर्पस है, हमने किसी चीज को खरीदा है, उसके मेन पर्पस से रिलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इज इट ए कंडीशन, बी वारंटी, सी क्लॉज, डी अंडरटेकिंग? सो इसको हम कहते हैं कंडीशन. सच स्टिपुलेशन इज कॉल्ड कंडीशन. और ये हमें कहां से पता चलता है? सेक्शन 12. Section 12 of Sale of Goods Act gives us the definition of condition and also the definition of warranty. Okay, condition और warranty की definition हमको section 12 में मिलती है. Now let's move to the next question. In case of sale by auction, where goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be a subject of a composite contract of sale, B part of the consolidated contract of sale, C separate contract of sale, D contract as determined by the mutual consent of the parties. So इसका आंसर है separate contract of sale. And ये लिखा है, ये जो बात हमने पढ़ी है, लिखा है section 64 of the act में. Okay, Section 64 of the Sale of Goods Act talks about this कि ऑक्शन में जहां पे जो गुड्स हैं,
अगर उनको सेल के लिए लगाया जाता है और वो डिफरेंट लॉट्स में है, तो ईच लॉट इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये डायरेक्टली बैराक का क्वेश्चन है और वहां से ही उठाया गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The principle of nemo that quod non habet is enshrined in which of the following provisions of the Sale of Goods Act? Now, nemo that quod non habet का मतलब क्या होता है? No one can give what they do not have. ओके, नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। तो ये कहाँ पे एनश्राइंड है हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, किस सेक्शन में इस चीज की बात की गई है? दैट इज सेक्शन 27, क्योंकि सेक्शन 27 बात करता है सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। ओके, सेल बाय पर्सन हु इज नॉट द ओनर। सो इट इज टॉकिंग अबाउट कि जिसके पास खुद टाइटल नहीं है वो कैसे बेच सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द अग्रीव पार्टी हैज अ राइट टू क्लेम डैमेजेस but does not have a right to reject the goods and repudiate the contract? A, breach of condition, B, breach of warranty, C, breach of any stipulation in a contract of sale, D, breach of essential terms of the contract. So ये इसका आंसर है आपका ब्रीच ऑफ वारंटी, और ये अगेन हमें सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 से पता चलता है, जो हमें ये बताता है कि अगर एक आपने वारंटी का ब्रीच होता है तो उसमें आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, पर आप रेप्यूडिएट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को। यू कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। Now let's move to the next question. Which provision of the Indian Partnership Act 1932 defines the term partner, partnership, firm and firm name? A, section 3, B, section 4, C, section 5, D, section 6. कौन सा प्रोविजन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का? गुड इवनिंग प्रिंसी, इट इज वैसे गुड आफ्टरनून, आई थिंक गुड आफ्टरनून वुड बी अ गुड सैल्यूटेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो 3, आर यू आंसरिंग द क्वेश्चन? ए बी सी के फॉर्म में आंसर करिए अगर आप इसको आंसर कर रहे हैं तो। So which provision of the Indian Partnership Act defines the term partner, partnership, firm and firm name? Or you're saying it is defined by section 3, where section 4 इसे define करता है। So BERAC का directly question है section 4 defines, ये सारी जो definitions है वो section 4 में दी है। Let's move to the next question. Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his A, undue influence, B, coercion, C, fraud, D, misrepresentation. Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his A, undue influence, B, coercion, C, fraud, D, misrepresentation. The answer to this question is C. Princey says C. Correct. Fraud. Can you give me the section as well? कौन से section में ये बात लिखी है? This is written in section 10 of Indian Partnership Act. Section 10 of Indian Partnership Act gives you this provision. Next question. Which of the following cannot join other as a partner in the partnership firm? A, educational institution, B, medical institution, C, charitable institution, D, child care institution. No, Princey. The answer to this question is charitable institution. ये सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट से हमें पता चलता है वैसे ये बात, बट एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन
जो हमारा कंपनीज एक्ट है उससे हमें ये पता चलता है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट से हमें ये पता चलता है कि एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता. ओके, सो द आंसर इज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. The provisions of the Partnership Act 1932 which deals with absolute duties of the partners: A section 9, B section 15, C section 16, D all of the above. मैंडेटरी ड्यूटीज से कौन सा सेक्शन डील करता है, जिसके लिए आपको एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना होता है, जस्ट मैंडेटरी ड्यूटीज होती हैं जो सारे पार्टनर्स की, उससे डील करता है सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट. Okay, this is section 9 of the act which deals with the mandatory duties of the partner. Okay, now let's move to the next question. The property of the firm does not include: A, property originally brought into the stock of the firm; B, property subsequently purchased from the firm's fund; C, goodwill of the business; D, none of the above. क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी, इसमें से फर्म की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होगी. इनमें से कौन सी फर्म की प्रॉपर्टी नहीं होगी? प्रॉपर्टी ओरिजिनली, शुभाशी से सी. वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, बिकॉज ये सारी ही चीजें प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होती हैं. और ये कहाँ पे लिखा है, ये चीज कहाँ पे लिखी है? कैन यू गिव मी द सेक्शन विच टॉक्स अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म? It is talked about in section 14 of Indian Partnership Act. Section 14 talks about the property of the firm. Okay, let's move forward. The liability of every partner in the partnership firm is: A, several; B, joint; C, joint as well as several; D, individual only. The liability of every partner in the partnership firm is: A, several; B, joint; C, joint as well as several; D, individual only. So the answer to this question is joint as well as several. एक पार्टनर की जो पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी होती है वो जॉइंट एज वेल एज सेवरल होती है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन. और एक बार हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे. आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू शुड डू फॉर द एग्जामिनेशन. The implied authority of a partner does not empower him: A, borrow money in a trading partnership firm; B, institute a suit or proceeding on behalf of the firm; C, withdraw a suit or proceeding filed on behalf of the firm; D, all of the above. So the answer is C. Withdraw नहीं कर सकते आप पार्टनरशिप फॉर्म के किसी भी प्रोसीडिंग को, और ये लिखा है सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट में. नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ. द आंसर टू दिस इज नॉट डी, द आंसर टू दिस इज सी. वो क्या क्या करने को उसको एम्पावर नहीं करता है, वो उसकी लिस्ट दी है सेक्शन 19 में. Okay, so let's quickly discuss the most important section of Indian Partnership Act, and then let's discuss the most important section of this Sale of Goods Act. So Indian Partnership Act में आपको पढ़ना है section 2. Then you have to read, you must do section 4. उसके बाद आपको section 5
is important. Then section 6 is important. And 7, 8 is important. 10 भी काफी 10 पे क्वेश्चन आता है, 10 important है. 11, 12 is important. 13 से भी क्वेश्चन आता है, 13 is important. 14 is important. And you must do 17, 18, 19 important है. और 28 is important. होल्डिंग आउट बहुत इंपॉर्टेंट है. 30 से क्वेश्चन आते हैं, 30 इंपॉर्टेंट है. एंड 31 is also important. 32 is important. रिटायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. 33 and 34, 35, 36, 39, 40. And then you must do 42. और उसके बाद 45 करिए. And then you have to do 59, which is registration. And you must do 69, which is effect of registration. This is what you need to do in Indian Partnership Act. And then let's look at the most important section of Sale of Goods Act. Sale of Goods Act is pretty small. एक मैं आपको बताती हूँ जो most important है. Section 12 of Sale of Goods Act is very important. And 18 to 24. इतना तो बेसिक आपको करके जाना है फॉर द एग्जामिनेशन कि आप सेक्शन 12 को अच्छे से कर लें और सेक्शन 18 to 24 को कर लें. इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, तो एटलीस्ट कंप्लीट दिस मच. इट इज कंसिडर्ड अ माइनर एक्ट. सेक्शन 2 में मैं आपको बताती हूँ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है. सो सब क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट है, सब क्लॉज 7 इंपॉर्टेंट है. इन दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद मैंने आपको 12 बता दिया. 12 यू मस्ट डू and 18 to 24 you must do in Sale of Goods Act. So this is what is important. And also chapter 4 of the act. Okay, so this is what you must do in Sale of Goods Act. And I hope आपकी preparation अच्छी चल रही होगी. Before you leave, like and share the session and press the bell icon and subscribe to the channel. Thank you so much.